Hello everyone, how are you all? So, this is my next video of my series, the series of word literature. In this series, I have already made three videos in which I um, discuss ancient literature, British literature, very important, many important authors and some important points of the English literature. So this is my next video of the series. So let's start. This video is about feature of 15th century literature. What are the features of 15th century literature? In my previous video, I discussed some important authors and the history of the 15th century literature. So, what are the features of 15th century literature? For the whole of Europe, it was a period of unrest. So, 15th century is the period of unrest. Why? Because at that time, James I, who was the King of Scotland, was in 1406 captured by the English and detained for 18 years, returning to Scotland in 1424. It means James I, who was the King of Scotland, he was captured by the English and he returned to his reign in 1424. He ascended the throne of Scotland and once again began to avenge himself on the nobles who have kept him in detention. In 1437, he was murdered by a band of conspirators. So, this is the James I. Now, Martin Luther. Martin Luther was the hero of Reformation in Europe. Now, Constantinople, the seat of Greeks and Latin learning, fell under the attack of Turks in 1453. यानी कि जो ग्रीक और लैटिन लर्निंग थी उनके ऊपर अटैक होने लगा था टर्कीज द्वारा, इसलिए द ग्रीक एंड लैटिन स्कॉलर फेल्ड द सिटी कैरिंग द लर्निंग ऑफ ग्रीक एंड रोम विद देम, तो वो वहाँ से भाग गए थे. द इवेंट लेड टू द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन यूरोप, वो यूरोप की तरफ चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने इस वजह से वहाँ पे यूरोप में रिफॉर्मेशन आया था, which established a new era in Europe. Constantinople was the capital of Byzantine Emperor. 100-year War, which was fought between France and Britain, took place between 1338 to 1453. The War of Roses. There was a distracting political conflict which culminated in the 30-year struggle for power in 1455 to 1485. It means there was a struggle for power which was fought between 1455 to 85, and the conflict was between House of York and House of Lancaster. The struggle is called the War of Roses because the badge of Lancaster was red and the badge of York was white. And this is also called Civil War. In many wars, many of the great models were killed and old theatre of feudalism came to an end. In conclusion, it gave England the Tudor dynasty from Henry VIII in 1485 to Queen Elizabeth. यानी कि जब भी लड़ाई हुई उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड का जो रेन था वो हेनरी VIII से क्वीन एलिजाबेथ के पास तक वो मतलब उसके पास चला गया था. नाउ द Jack Cade Rebellion 1450. Jack Cade was an Englishman started a protest against maladministration in 1450. He led an insurrection of 15,000 men against London. The insurrection was suppressed by an armed forces and he was slain. He is like Wat Tyler, the leader of the peasant revolt in 1381. यानी कि एक रिवोल्यूशन हुआ था
जैकेट द्वारा, जिसमें उन्होंने 1450 में उसने किया था कि माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन उसको सप्रेस कर दिया गया था. एंड एवरी वन इज़ अ मोरालिटी प्ले बाय एन एनोनिमस राइटर विच अपीयर्ड इन 1510. प्रिंटिंग. विलियम कैसन introduced printing in London in 1476. He translated, printed and published a large number of books in London dialect. Political condition. What is the political condition of the time? At this time, England had to bear foreign and civil wars as well. मतलब civil war भी हो रहे थे, foreign war भी हो रहे थे. Henry VIII, who succeeded Henry V, जिसने हेनरी फोर्थ के बाद अपनी जगह ली थी, गेन सक्सेस अगेंस्ट फ्रांस एट द बैटल ऑफ एगिनकोर्ट इन 1415. मतलब उसने फ्रांस में अपनी सक्सेस कर ली थी 1450 में एंड बिकम अ नेशनल हीरो. बट ही डाइड सून एट द एज ऑफ 35 की एज में वो मर गया, लिविंग बिहाइंड अ 9 month ओल्ड बेबी एज हेनरी VI. छोटा सा बच्चा था हेनरी VI, इसका नाम था, छोटा सा 9 month का. Who was declared the king of England and France. तो उसे डिक्लेयर किया गया था किंग ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस. देन ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड बिकम द रीएजेंट इन फ्रांस. उसके बाद ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड ने बोला, जो कि रीएजेंट थी इन फ्रांस में, एंड ड्यूक ऑफ ग्लोकेस्टर इन इंग्लैंड एज हेनरी VI वाज अ बेबी एंड नॉट एबल टू रूल. उन्होंने बोला कि हेनरी VI वाज अ बेबी एंड ही वाज नॉट एबल टू रूल इंग्लैंड एंड फ्रांस. उसने ये आइडिया रखा था. ब्रैडफोर्ड हैड टू एनकाउंटर द राइजिंग नेशनलिज्म इन फ्रांस हेडेड बाय फ्रेंच पीजेंट गर्ल जोन ऑफ आर्क, हु सक्सीडेड अ ट्रैम्प फॉर फ्रेंच आर्मी. अब फ्रेंच में नेशनलिज्म भी शुरू हो गया था, एंड दिस नेशनलिज्म वाज हेडेड बाय अ गर्ल हुज नेम वाज जोन ऑफ आर्क. Now the English army, however, captured her and burned her as a witch at Rouen, but she was burned. The English rule came to an end in 1436 and French king took reign to their country. उसके बाद इंग्लिश का जो रूल ख़त्म हो गया था और फ्रेंच किंग ने कंट्री पर अपना राज्य जमा लिया. Ballad was the most familiar writing genre in 15th century. James I of Scotland from 1394 to 1437 tells in his King's Quair his love for the lady Jane Beauport, the Duke of Somerset's daughter. यानी कि एक वर्क है किंग्स क्वेयर, जिसमें जेम्स फर्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने अपने लव के बारे में बताया है. किसके प्रति? जेन ब्यूपोर्ट के बारे में. विलियम डनबर्न. Gracefully allegorical poem The Thistle and Rose is composed to commemorate the marriage of James IV of Scotland and Margaret, who was the daughter of James VII of England. The best known ballad of Dunbar is Dance of the Seven Deadly Skin. तो जेम्स डनबर्न ने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था थेस्टल एंड रोज. Robert Burton's Antinomy of Melancholy and other cult of melancholy writers were writing books on humoral psychology during this period. After the fall of Constantinople in 1453, Renaissance in England started. During Renaissance period, poetry, drama and sonnet were the important genre. Humanism and Reformation are the two important movements of 15th century. The Castle of Perseverance is the earliest morality play written in 15th century. Now, Versifolio. It is a manuscript in 15th century handwriting which belonged to Humphrey Pitt of Shifnal, the most important source of our ballad literature and the basis of Francis Child's collection. एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है हेम्फी पिट ऑफ शिनफल से, जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स है बैलेड लिटरेचर के बारे में हमें बताता है. इट वॉज द सोर्स ऑफ बैलेड इंक्लूडेड इन थॉमस फर्सी रेलिक्यूस. यह सोर्स है बैलेड का, ठीक है, और इसके अंदर थॉमस फर्सीज का ये वर्क भी इंक्लूड है. इट आल्सो कंटेन द 14th century alliterative allegorical poem डेथ एंड लाइफ. नाउ फर्सी सोसाइटी. It was founded in 1840 by Percy Society was founded in 1840 by Thomas Crofton Croker, Alexander Dice,
James Halliwell Phillips, John Spinney Collier. The society was found for the purpose of पब्लिशिंग ओल्ड इंग्लिश लिरिक्स एंड बैलेट, मतलब एक फ़ारसी सोसाइटी थी जिसमें ये सभी लोग थे और उन्होंने ये सोसाइटी फाउंड करी थी कि जो ओल्ड इंग्लिश लिरिक्स या बैलेट है उनको वो पब्लिश करेंगे. एंड इट वाज नेम इन द ऑनर ऑफ थॉमस पर्सी. थॉमस पर्सी के नाम से इसको ऑनर किया गया.